Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel, and here's my Karwachauth look for you guys. So let's get started with the festive Karwachauth look. So सबसे पहले I really like to moisturize my skin really well. मैं normal अपना skin care कर चुकी हूँ. I am just applying color or dry oil to give that extra moisture. अगर आप oil try करना चाहते हैं, you can start with this. This is a really good oil और ये हर किसी skin type को suit करता है. I actually really love this oil. And I have just few oils जो कि मुझे अच्छे लगते हैं यूज़ करने. Let me know if you want a video on that. Anyways, then I'm just gonna prime my skin using Pixie Makeup Fixing Mist. This is a multi-purpose mist. आप इसे makeup के बाद, makeup के पहले जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं. I'm just applying a little bit before the makeup, and now I'm just gonna do the color correction. और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी Forever 52 की Camouflage palette. I'm using darker color to color correct my under eye dark circles and sides of mouth, and यहाँ पे भी मुझे लग रहा है pigmentation है. I'm just correcting it. Now I'm taking this lighter skin shade, and I'm just applying to my lid area just as a base for eyeshadow. और इसे मैं set करूँगी loose powder के साथ because my eyelids are super oily. और जो loose powder मैं use कर रही हूँ, that is from PAC. It is their translucent powder, and I'm just applying with a puff. Now I'm taking this Makeup Revolution Forever Flawless palette in the shade Allure, and I'm using these burgundy reds color. और सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक brown shade. ये हमारा transition shade होगा जो कि मैं outer corners पे लगा रही हूँ और crease पे लगा रही हूँ with a fluffy blending brush. And उसके बाद I'm just gonna take a shade called a Nymph, which is a little darker mauvish color. और इसे मैं पिक करके आई एम जस्ट गोना अप्लाई एंड कंसंट्रेट ऑन आउटर कॉर्नर्स. और इसे मैं एक्चुअली पूरे लिड पे ही लगाऊंगी. मेन कंसंट्रेशन विल बी आउटर कॉर्नर्स, एंड देन आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट रियली वेल विद द आई शेडो, ब्राउन आई शेडो आई पुट बिफोर. और अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से आई एम जस्ट गोना ब्लेंड द एजेस. नाउ आई एम टेकिंग अ शिमरी शेड. आप कोई भी ले सकते हैं. आई एम जस्ट गोना टेक द सेडक्शन. दिस इज़ अ रियली नाइस रेडिश शिमरी कलर. एंड मैं फिंगर्स की मदद से जस्ट सेंटर ऑफ माई लिड्स लगा रही हूँ, एंड आई एम ब्लेंडिंग इट रियली वेल, स्पेशली द एजेस. Brow bone highlight करने के लिए I'm using the shade called Hedonism, and this is a matte creamy shade, and I'm just highlighting my brow bone area really nicely. And for inner corners I'm using a gold shade just to brighten and open up my eyes. अब मैं ले रही हूँ MAC का graphic black liner, and I'm just lining my upper lash line with it because मैं एक smoked liner करना चाहती हूँ. And I'm taking a pencil brush and I'm just smoking it out. Now for the face I'm gonna use two foundations. सबसे पहले मैं ले रही हूँ Estee Lauder Double Wear Foundation in the shade Cashew. इसके साथ मैं मिक्स करूँगी Maybelline Matte Poreless Foundation in 310. That's my shade. I'm mixing it together and applying it on my face, and I really love the finish of these foundations together. And I'm just blending with a फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश. और आप देख सकते हैं कितना अच्छा डूई बेस लग रहा है मेरा, एंड कितना हाइड्रेटिंग बेस लग रहा है. Now for highlighting I'm using PAC Spotlight Concealer. I actually don't remember the name of this shade. And then I'm taking L'Oreal Infallible Concealer in 312. दोनों मिक्स करूँगी, and एक fluffy blending brush की मदद से I'm just gonna blend the concealer really nicely, and especially the edges, ताकि एक seamless look आए. Now I'm just gonna set the concealer with PAC translucent powder with a puff, और वहाँ लगाऊंगी जहाँ पे भी मैंने highlighting की है, just to set the concealer. Now I'm just gonna do my brows. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Miss Claire की eyebrow cake, and I'm using this darker brown shade, and I'm just filling my eyebrows really nicely to make them a little fuller and richer looking. Now I'm just
गोना डू माई लोअर लैश लाइन. तो मैं काजल लगा रही हूँ सेम जो मैंने अपर लैश लाइन पे लगाया था. एंड आई एम गोना स्मोक इट आउट यूजिंग nymph आई शैडो विद अ पेंसिल ब्रश. आप देख सकते हैं हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स. एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग देम टुगेदर रियली नाइसली विद अ फ्लफी ब्रश. आईब्रोज को भी थोड़ा सा और ग्रूम करूँगी एक स्पूली की मदद से ताकि थोड़ी सी ब्लेंडेड लुक आए, बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे. नाउ कमिंग टू फेस अगैन, आई एम जस्ट गोना पाउडर द फेस अगेन अ लिटिल बिट मोर. एंड बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक डिप लिया था मैंने. नाउ फॉर ब्लश आई एम यूजिंग Maybelline Fit Me blush in the shade 50 Wine. एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग टू माई चीक बोन्स. बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके आ रही हूँ, पीछे पीछे ही लगा रही हूँ. एंड ब्लेंडिंग इट रियली वेल. नाउ फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग Pixie Vitamin C highlighter in the shade Peachy. It's a beautiful rose gold highlighter. लव हाउ इट मेक्स माई स्किन ग्लो. आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो दे रहा है. थोड़ा सा ब्रिज ऑफ नोज़ एंड क्यूपिड्स बो पे भी लगाया मैंने. नाउ आई एम कमिंग बैक टू आइज़ और मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज़ का. एंड आई एम यूजिंग दिस बर्गंडी ग्लिटर ओनली एंड जस्ट अप्लाइंग टू द सेंटर ऑफ माई लिड्स जस्ट टू एड अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैम टू माई आइज़. फॉर लैशेज़ ऑल्सो मैं यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज़ की लैशेज़ इन दी स्टाइल ड्राइंग. And this is how the lashes are looking. Now for the lips I'm using lip liner from Swiss Beauty. It's in the shade Hot Red. अपने जो लिप्स है मैं लाइन कर रही हूँ अच्छे से. एंड मैं फिल कर रही हूँ शुगर की मैराज है लिप क्रेयॉन से इन द शेड 34 Cherry Aims. And this is how the lipstick is looking. Red, it looks really beautiful on Karwachauth, so definitely you can go for red lipsticks with a little bit of bold eyes and glitter eyes. And this is my final look. And how can a look be complete without jewelry and accessories? So यहाँ पे मैं jewelry पहन रही हूँ. These are beautiful earrings from Amazon. And I'm just gonna put a bindi, sindoor, and I'm all festive ready for Karwachauth. I really hope you liked this video and this look, and I will try to put all the links in the description box. Hopefully मैं जल्दी डाल सकूँ because I'm super busy these days. And I'll see you in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy and stay safe. Bye bye, take care.